Welcome back to Legal Matters, Qanuni Mashre. I'm IMRAN RIZVI. आपकी program को यहाँ host कर रहे हैं, discussing about legal issues, and inshallah, if you got any problems or any issues, we'll be more than happy to help you. हम चलते हैं, जो हमारी calls आई थी पहले उसका थोड़ा सा जवाब दे दें. जो फैसल भाई का जो call आई थी, basically he got 10-year ILR उनको मिला था on the basis, और वो पूछ रहे थे wife is in Pakistan, उनको ये question is that does she have to do life in UK? I think I mean we've had two guys both called Faisal. So the first guy, who is also Faisal, he's married to an EU national, and he wanted to know if the spouse would have to sit the life in UK test. So the short answer is yes. You have to demonstrate that you've got the knowledge of life in UK. And I think the nationality one was initially he wanted to know when he can apply for nationality after ILR. So you need to show that you've been legally residing in the UK for continuously for 5 years. Exactly. Shai sahab ek call aa rahi hai, pehle shamil kar de before we carry on. Hello. Hello, assalamu alaikum. Ji walaikum, welcome to the program. Kaun kahan se? जी जी मेरा इमिग्रेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन है. ठीक है. एक्चुअली मेरी हमने शादी कर ली थी अपनी, लाइक जो रिलीजियस निकाह होता है वो. ठीक है. अभी वो 2 महीने ओवरस्टे रह के वो वापस चले गए हैं, और इसमें यह है कि मैं बेनिफिट्स पे हूँ, तो मैं तो यहाँ से उनके वीज़े का अप्लाई नहीं कर सकती. तो वो वहाँ से कोशिश कर रहे हैं उसका जो ये 64,000 आप होता है, अगर आप अपने बैंक में शो कराएं और उस बेस पे, तो क्या 2 मंथ्स ओवरस्टे रहने के बाद वो उस वीज़े के लिए अप्लाई कर सकते हैं? ये जो मरीन पैन जो आपने कहा ना, जो वो 64, वो क्या बिजनेस वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं? व्हाट्स ही ट्राइंग टू डू? हाँ जी, बिजनेस वीज़ा, बट वो यहाँ पे जब हमने लॉयर्स वगैरह से डिस्कस किया था, तो उन्होंने कहा था कि ये बिजनेस प्लस स्पाउस वीज़ा कहलाएगा, क्योंकि वो मैरिड है, और इस वजह से मतलब क्योंकि मैं यहाँ पे बेनिफिट पे हूँ, मैं अप्लाई नहीं कर सकती उनके लिए. बच्चे हैं मेरे छोटे अभी 2, और मैं मतलब बेनिफिट ले रही हूँ, जॉब सीकर हाउसिंग बेनिफिट. ठीक है, ठीक है, आपका सवाल आ गया, हम समझ गए, और इंशाल्लाह अभी प्रोग्राम वॉच करें, आपको जवाब देंगे. विल डिस्कस योर सिचुएशन, आपके इसी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे. हेलो, एक और कॉल आ रही है, इसे शामिल करते हैं. हेलो 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 जी, अस्सलाम वालेकुम. कौन कहाँ से? जी आज़म बात कर रहा हूँ ब्रैडफोर्ड से. ओके, अफजल भाई आप अपना सवाल बताएंगे. सर मैं स्टूडेंट वीज़े पे आया था 2009 में. तो उसके बाद मैंने एक्सटेंशन कराई थी 2011 में, लेकिन मैं कॉलेज अटेंड नहीं कर सका था, और मैंने ब्रिटिश सिटीजन से शादी कर ली थी. अभी तकरीबन 1.5 साल हो गया. तो मेरी वाइफ प्रेग्नेंट भी है, और बेबी ड्यू इसी मंथ में इंशाल्लाह ड्यू है. तो बाकी जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ, इमिग्रेशन वाले वहाँ आ गए थे, तो उन्होंने कहा कि आपका वीज़ा स्टूडेंट वीज़ा जो है क्वारंटाइन हो गया है और आप काम नहीं कर सकते. तो उन्होंने मुझे रिपोर्टिंग पे लगा दिया. ठीक है. जा रहा हूँ, मैंने अपनी FLRA की एप्लीकेशन की थी जो रिफ्यूज़ हो गई थी. उसके बाद अभी मेरी वो जो ना रिकंस्टिट्यूशन की एप्लीकेशन पड़ी हुई है वहाँ पे. ठीक है. लेकिन अभी मैं ये चाह रहा हूँ कि अभी मैं जब बेबी ड्यू हो जाए तो नई एप्लीकेशन करूँ, वो कौन से फॉर्म पे करूँ, नहीं या उसी पर वेट करूँ? ठीक है. ठीक है अफजल भाई, आपका हमारे पास क्वेश्चन आ गया है. एंड आपकी जो वाइफ हैं, जो वो क्या जिनसे आपने कहा ब्रिटिश हैं, वो क्या जॉब करती हैं? कि उनका स्टेटस हमें पता है, शी इज़ ब्रिटिश, बट डज शी वर्क? क्या है उनका सिचुएशन, क्या है? कॉल ड्रॉप हो गई, जैसे मैं से कॉल आ रही है, इसे शामिल कर दें. हेलो वालेकुम. वालेकुम, कौन कहाँ से? मैं बोल रहा हूँ सर हडर्सफील्ड से. ओके, इमरान नाम. ओके, थैंक यू इमरान, दैट्स गुड. आप अपना सवाल बताएं. हेलो, आप अपना सवाल बताएं. ये ऑन एयर, आप इस वक्त टेलीविजन प्रोग्राम लीगल मैटर्स पे. सवाल मेरा ये है, ठीक है सर, सवाल मेरा ये है कि मैं स्पाउस वीजे पे आया था पाकिस्तान से 2011 में, और जी आप बोलें. आपका और 7 माह के बाद ना मेरी बेगम ने वीजा रिफ्यूज करा दिया था, और मेरे 2 बेटे थे. उसकी बिहाफ पे मैंने फिर वो वीजा
ویزا اپلائی کیا تھا تو اور مجھے اس کے بعد نا انہوں نے وہ ویزا بحال کر دیا تھا جو پہلے انہوں نے اسپاؤس ویزے پہ دیا تھا بچوں کے بہاف پہ. تو اس کے بعد انہوں نے مجھے کہا تھا کہ آپ فیملی کورٹ سے ان بچوں کا کانٹیکٹ لیں تو اس کانٹیکٹ کی بیس پہ آپ کو ویزا آگے اپلائی. تو وہ کانٹیکٹ ٹیمپریری تو مجھے ملا تھا, بعد میں میری بیگم نے جھوٹا الزام لگا کے وہ کینسل کروا دیا. اور وہ کینسل ہونے کے بعد میں نے جب میرا ویزا یہ جو پہلے مجھے اسپاؤس ویزے پہ انہوں نے ایکسٹینڈ کیا تھا تو وہ اب ختم ہو گیا, میں نے پھر اپلائی کیا. تو اب میرا فیملی کورٹ میں بھی میٹر چل رہا ہے اور مجھے 2 سے 3 دفعہ جج نے ایکسٹینشن وہ ڈیٹ آگے دے دی کہ جب تک آپ کا فیملی کورٹ کا آرڈر نہیں ملے گا اتنی دیر تک ہم آپ کو اس کیس کا فیصلہ نہیں کر سکتے. تو 1 سال سے زیادہ اب 1.5 سال ہو گیا کہ ابھی تک انہوں نے میرا پاسپورٹ سب کچھ رکھا ہوا ہے, ویزا نہیں دے رہے. اور فیملی کورٹ میں وہ کیس کو نا بہت پرولانگ لے کے جا رہی ہے جھوٹے الزام سے. ہر دفعہ کوئی نہ کوئی نیا الزام لے آتی ہے, کبھی کچھ چھوٹے چھوٹے پوائنٹس پہ. وہ خود بھی سولیسٹر ہے, جو میری ایکس وائف ہے وہ خود سولیسٹر ہے. تو اس طرح فیملی کورٹ میں اب فائنل ہیئرنگ ہے میری جو ہے نا وہ جون میں رکھی ہوئی ہے انہوں نے. تو میں نے سارے وہ جو پروف ہیں ابھی تک اس کا کوئی الزام دیگر بھی میرے پہ وہ پورا نہیں ہوا کہ میں نے وہ الزام اس کا سچا ثابت. جج نے 4 ڈیز کی فائنل ہیئرنگ رکھی ہے. تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا مجھے اگر فیملی کورٹ نے ایکسیس بچوں کی نہ دی, کیا ہوم آفس مجھے وہ ویزا نہیں دے گا یا واپس بھیج دے گا یا اس کا کیا رزلٹ نکلے گا؟ چلیں ٹھیک ہے, آپ کا کافی کمپلیکیٹڈ میٹر ہے بیکاز ہمیں یہ نہیں پتا آپ پہ ایلیگیشنس کیا لگی ہیں ابھی. انشاءاللہ ہم آپ کو جواب دیں گے, آپ کو تھوڑا گائیڈنس بھی دیں گے. آپ کے پاس ہمارا ای میل ایڈریس آ رہا ہے, اگر آپ چاہتے ہیں آپ اس میں تھوڑا سا انفارمیشن ہمیں اور دیں, ہم آپ کو اس پہ ڈیٹیل آپ کو ایڈوائس دے سکتے ہیں. بٹ تھینک یو فار یور کال. شاید اوبیسلی جو کال آئی تھی جو پہلے جو فیصل کیا اب ہم نے بتا دی لائف ان یو کے ٹیسٹ انہیں دینا ہے, اینڈ آلسو فار نیشنلٹی کے 5 years لیگلی ریزائڈ ان دین کین ڈو دیٹ. تو یہ تو ہو گیا. دوسرے فیصل کی جو کال آئی تھی جی ان کی وہ مسز ہیں پاکستان میں اینڈ ایکسپیکٹنگ اے چائلڈ ایز ویل, اور وہ پوچھنا چاہ رہے تھے کہ کیا طریقہ کار ہے ادھر. But we don't know whether the visitor visa tha, yes, switching is not allowed from visitor. جی ہاں, تو پہلے تو یہ بتا دیتے ہیں switching. 2 ایشوز ہیں. اگر آپ نے ان کو ایز اے جینیون اسپاؤس ادھر اسپانسر کرنا ہے تو آپ کو پھر وہ 18,600 کا جو فائنینشیل کرائٹیریا ہے وہ میٹ کرنا پڑے گا, پلس ایڈیکویٹ اینڈ سوٹیبل اکوموڈیشن. But in the real issue is that if she's coming on a visitor visa, she can't switch. Yeah, I mean the rules are quite complicated when it comes to visitors coming here and wanting to switch to another category. But if Mr. Faisal were to actually contact us, then we can advise him in more detail. Sure. چلیں میں ابھی آپ ڈسکس کریں, کال آگے اسے شامل کرتے ہیں. Hello. Hello. Welcome to the program. Can we have your name and question? Yes, sure. Myself, Aslam RIZVI. Okay, thank you for your call. And can we have your question? Yeah. Basically, I want to know about it shared ownership. ہم لوگ ایک گھر خریدنا چاہ رہے ہیں shared ownership میں, and the agency we are trying to buy from, they got quite so much say and so much manipulation. Like initially when we also like, okay, we want to go for this, like 50% share. They say yes, you can go ahead for that. Then later on when we put our case and we said, okay, this is the mortgage we will take. So they say, okay, you can only borrow like 4.5 times your actual net earning. Yeah. But then later on they're saying you can actually borrow only like 4 times your net earning. And also they're also changing the terms of the how long for you can take the mortgage. So like they initially we were hoping we can go for 34 years because of my age. I can go for higher, high term. But now they are saying, you can go only for 25 years of term. And I tried to find out so much information, I tried so much to find information about this shared ownership. مگر اس کے بارے میں کہیں کچھ انفارمیشن مل نہیں پا رہی ہے. سو I was just wondering if you have any idea about it and if you can guide us. Yeah, sure. Aslam bhai, thank you for your call. Obviously, one thing viewers کو بتا دیں کہ we do not give mortgage advice because that's a regulated area
and obviously uski different rules hote hain, we have to be careful with that. No, I'm not asking about the mortgage. I'm trying to figure out the share ownership or the housing association, those who run this shared ownership business. No problem. You need to seek advice from an independent financial advisor on the land and on the financial terms and the rules and regulations. ठीक है. I think Aslam bhai, aap hamara program dekhe. Obviously, we'll try to give some guidance where we can, but obviously, I've made the position clear. Ye is a financial independent financial advisor can come onto that, but we'll try to help you anyway. Ek aur call aa rahi hai, shamil kar dein. Hello. जी आपकी टीवी ऑन है, वी कैन फीडबैक. आप अपना नाम बताएं, क्वेश्चन बताएं प्लीज. हेलो अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. वेलकम टू द प्रोग्राम. कौन कहां से? जी मैं दोबारा फैसल बोल रहा हूँ. सॉरी आपको दोबारा डिस्टर्ब किया. मैं आपके जवाब से थोड़ा सा मुतमिन नहीं हुआ. अच्छा सवाल मेरा मैं दोबारा आपको सुनाता हूँ. सवाल ये है कि मैंने इस अगस्त में सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करना है, तो वो अप्लाई करने के बाद मैं पासपोर्ट कब अप्लाई कर सकता हूँ? मतलब ये है कि क्योंकि मेरा ड्यू तो है अगस्त में जो आ रहा है, कमिंग अगस्त, इसमें मुझे यानी कि पहले ऑलरेडी मेरे पास इंडेफिनिट है, ड्यू है, यानी कि अगस्त में ड्यू है, तो सिटीजनशिप अप्लाई करने के बाद मतलब मैं फौरी कर सकता हूँ या ओथ लेने के बाद मुझे उसका कोई इंतजार करना पड़ेगा? क्या है मसला पासपोर्ट? उसने कहा था कि आप 5 साल के बाद स्टेट में अप्लाई कर सकते हैं. जी जी. तो ये मैं पूछना है कि इसके सिटीजनशिप के लिए इंतजार करना पड़ेगा या क्या करना है? You can apply that one. Thank you for your call. शुक्रिया. इनके जब we did answer life in UK test आप जब पास कर लेते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं. He's got no problem. जी हाँ. आपको फैसल भाई कोई मसला नहीं है. The issue is about life in UK test. You need to pass करके फौरन कर. बिल्कुल. You can apply. ये तो आपके ऊपर है. जब चाहें कर सकते हैं. We understood it as इस तरह हम समझ रहे थे इस क्वेश्चन को, but I am hoping that you now understand clearly और आपको क्लियर कर दिया आपकी इस बात का. दूसरी जो हमारी कॉल आई थी शायद we mentioned about ये जो फैसल दूसरे फैसल साहब थे उनका हमने बता दिया switching. Visitor from a visitor cannot switch. And they still have to do a life in UK test. They have to pass that one. Yes. And exactly. So ये ब्रैडफोर्ड से कॉल आई थी स्पाउस वीज़ा के बारे में. 18,600 के हमने थोड़ा सा डिस्कशन करा था. 18,600 अभी लॉ है, वो चेंज नहीं है. You have to meet that financial requirement. वो तो अभी भी है. शकील साहब की जो कॉल आई थी, talking about appeals rights under tier 1 entrepreneurial. These are the ones we need to पूछना चाह रहे थे कि जो अपील राइट्स जो curtailed हुए हैं वो कब से अप्लाई हो रहे हैं. तो जो न्यू इमिग्रेशन बिल आया है उसके तहत जो भी फ्रेश एप्लीकेशंस डाली जाएंगी obviously they'll be considered under the restricted right of appeal. Previously when a decision was refused you had 7 days to appeal that decision, and if you were actually detained then you only had 4 days to actually challenge that decision. I'm talking about judicial review here now. So again they are imposing further limitation on these rights. So obviously the technicalities of how much is being further restricted is still to be decided by the Home Office, but the chances are there will be further curtailing these limits. which I think शकील साहब आपको पता है आपको जो मिल गया कॉल आ रही है इसे शामिल करते हैं. हेलो लगता है कॉल ड्रॉप हो गई. वो कैरी ऑन. Obviously the appeal rights को ये बता देते जो appeal rights होंगे the previous जो applications गए वो going to be based on the the previous rules. So they're already being considered under the old rules. Exactly, the old rules. कॉल आगे इसे शामिल करते हैं. हेलो कौन कहाँ से? वालेकुम सलाम. कौन कहाँ से? सर मेरा क्वेश्चन है, हाउसिंग बात कर रहा हूँ. मैं अभी आपसे क्वेश्चन किया था. मैं कह रहा हूँ मेरी वाइफ जो है ना वो काम नहीं कर रही, बेनिफिट पे है, तो इसलिए मैं मेरा सॉरी आपका नाम क्या था? नाम फिर से बताएं. मैं इसलिए पूछ रहा था कि अभी मैं ह्यूमन राइट्स की जो एप्लीकेशन दोबारा जब मैं बेबी ड्यू हो जाए तो उसके ऊपर मैं किस फॉर्म पे ऊपर कर सकता हूँ, क्योंकि वो बेनिफिट हो तो मैं बेनिफिट के ऊपर वाइफ, इसलिए मैं वो जो है ना स्पाउस वाला तो कर सकता हूँ. आपका नाम क्या है? आप अपना नाम बताएं. क्या आपका नाम अफजल है? नाम है ब्रैडफोर्ड से. बोला मैंने अभी कॉल की थी आपको. जी नाम बताएं. ब्रैडफोर्ड से इन्होंने कॉल किया अभी. What's your name? मोहम्मद I think. आपका नाम क्या था? आज़म. Sorry? आज़म. Babar. आज़म. Okay, right. We'll just come back to you. Thank you for your call. शुक्रिया. बहुत सारी कॉल आई, बहुत सारी कॉल ड्रॉप हो गई. I'm so sorry. लाइन कुछ साफ भी नहीं थी. हम इस वजह से हम आपकी कॉल
proper सवाल भी नहीं समझ पाए थे earlier on, but we're trying our level best. शकील साहब का सईद का जो फ़ोन आया था on entrepreneurial visa. Now, जी हाँ, वो पूछना चाह रहे थे कि क्या rules और requirements क्या हैं. But before we do that, एक कॉल उससे ले लेते हैं फिर हम इनको बता दें. जी, hello. Hello, कौन कहाँ से? Welcome to the program. Can we have your name and question, please? My name is Khan. Your name is? Khan. Khan. Okay, welcome to the program. हमारा प्रॉब्लम ये कि हमने पासपोर्ट में चेंजिंग किया थोड़ा, तो एक बेटे का जो 5 महीने बाद उसका अप्लाई करने ब्रिटिश के लिए, तो उससे पहले ये कार्ड चेंज करना पड़ेगा क्या? अपने दूसरा सवाल ये कि दूसरा बेटा है मेरा, वो उसका केस रिफ्यूज हुआ था, फिर कोर्ट ने उसे वही 27 मंथ का फिर रिन्यू कर दिया कोर्ट में, लेसन पर कुछ पॉइंट लगे थे, उसकी वजह से रिफ्यूज हुआ था. खान साहब आपके क्या लगे थे? आप थोड़ा सा अपना बताएं. आपका बहुत इंफॉर्मेशन कम आप दे रहे हैं. यू वांट एडवाइस, वी नीड, आप ज़रा सा बताएं ना, इंफॉर्मेशन बताएं. आपकी कौन सी एप्लीकेशन थी और क्या चीज़ थी जिसकी वजह से पहले रिफ्यूज़ हुई थी? ये थोड़ा सा बताएं ना. ये पहले तो मैं ब्रिटिश हूँ ना, मेरे बच्चे मेरे डिपेंड आए थे ना जी, तो सबको फैमिली को मिल गया वैसे. एक बेटे का केस रिफ्यूज हुआ था, ठीक है. कोर्ट ने उसको फिर वही 27 मंथ का दे दिया है. अभी वो केस का 3 साल बराबर हो गए. अभी उसके वीजे में भी 1 साल है. अगर हम जल्दी अप्लाई कर सकते कि नहीं? ओके. और दूसरा सवाल ये है कि हमने पासपोर्ट में कुछ चेंजिंग किया है, तो कार्ड में चेंजिंग नहीं है, इस वजह से मैं बोलता हूँ किसके बाद पहले चेंज करना पड़ेगा. आपने जो चेंज पासपोर्ट में जो कह रहे हैं कि आपने नाम बदल रहे हैं, क्या है? खान साहब थैंक यू आपका कॉल, थैंक यू वेरी मच फॉर कॉल. खान साहब प्रोग्राम वॉच कर हम आपको जवाब देंगे. थैंक यू फॉर द कॉल. थोड़ा सा चलते हैं डिस्कशन अबाउट द एंटरप्रेन्योरल वीज़ा. नाउ लेट्स जस्ट टॉक अबाउट दिस एंटरप्रेन्योरल वीज़ा. जो सही साहब की जो कॉल आई थी जी हाँ. Now, funded again, we need to send 50,000. Funding, if like he said, his brother is already in UK and he's a student, so he's got 2 options. One is that somebody is willing to invest 50,000 in his business venture, or secondly, he's got access to 200,000 pound or access to 100,000 pound jointly with another person who also wishes to apply for entrepreneur visa for the same business. So those are the different categories or routes available. Obviously you need to satisfy the English language requirement as well. Let's just go back on to the 50,000. 50,000 को सही साहब को understand ये करना पड़ेगा. That has to be from approved venture capital. या वेंचर कैपिटल कंपनी या फिर जो फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी है उनसे अप्रूव्ड जो है, रेगुलेटेड जो है. He cannot use his own money or third party money. Third party ये तो बिल्कुल ही आपको बता देते हैं, आप अपने मनी यूज नहीं कर सकते ना थर्ड पार्टी का. Let's just talk about this a little bit. थोड़ा सा. So basically he can do the 50,000 pound. It has to be from a venture capital. And also he can bring a partner in who can then put 100,000 pound in. That's right. Yeah, those are the 2 different routes options available. But the point is that this category is also subject to genuineness test. So it's not that you've got access to 50,000 or 100,000. You also need to submit a business plan, and this is where a lot of the applications get turned down or refused. Let's just talk about it. Thoda sa mazid bata de. Now, from our experience of being solicitors, and we understand this very well, Saeed Saab ko ye kehenge that on the basis of you don't have a very good market research or business plan, no matter you've got the funds, funding hone ke bawajood, agar aap ye soch rahe hain I can do this, you will be, aapka refusal ho sakta hai, and we know. So I think he has to get a very good business plan, so market research done. That's right. And to incorporate this into his. He needs access to a very good accountant who can then guide him through his marketing research and
having a viable business plan. मसले शायद अपने जो व्यूज़ जिस वक्त प्रोग्राम देख रहे हैं हम उनको ये इंकरेज करेंगे तो वो कोई अपने वकील से बात करें या हमें कांटेक्ट करें. वी कैन हेल्प यू इन दिस एंटरप्रेन्योर वीज़ा. स्विच इनके एज ए स्टूडेंट यू कैन स्विच, नो प्रॉब्लम. हम आपको इसमें गाइडेंस दे सकते हैं, लीगल पोजीशन आपको बता सकते हैं एंड जो इनके जो पिटफॉल्स होते हैं आपको बता सकते हैं. हाउ वी कैन हेल्प यू दैट. सो थैंक यू फॉर योर कॉल फॉर दैट वन. आई थिंक इट्स वेरी यूजफुल. जो कॉल आई थी मरियम की, शी इज ऑन बेनिफिट, सेकंड मैरिज निकाह हो चुका है. शी वांट्स उनके husband previous 2 months overstay and she's thinking about to come on a business visa, and that will be a business as a well, I mean, she alluded to a spouse visa, spouse business visa. I've not actually come across that category myself, but obviously there is a genuine entrepreneur visa which is tier 1, but for that you need to have access to £200,000. I think the question of Mariam ka jo question inko jo seriously affect hoga will be the fact that he was an overstayer. Overstay, and if you leave voluntarily, you get like 1 year ban. Yeah. So agar inka ye hoga, we're not too sure about this business spouse one. I think Mariam agar aap chahti hain hum aapko guide karne ki, we can help you with this one. आप क्या कर सकते हैं, आपको लीगल तौर पे आप बता सकते हैं, बट आप ऑलरेडी ये कह रही थी you're on benefits. So that she understand that she can't really cannot actually sponsor. No. और जो business पे आ रहे हैं, then obviously he has to fit in. ये आपको बताता चलो, आपके जो husband होंगे ना, he will have to show on a business that इनके funds इनके and he's readily investing into the business, because those people who got money to invest in the United Kingdom, there is another category where they're looking for a large sums of money, like £1 million. Yeah, that's an investor visa. Investor visa, yeah, that's right. So I don't think that will be appropriate because that kind of money is not available. So she's probably looking at it as business. Yeah. I mean, again, her situation is quite complicated, and it's not a straightforward yes or no sort of a question or answer we can give. But if she were to contact us, then we can actually guide her certain ways that they can actually apply for that. ठीक है, अगर मरियम आप वॉच कर रहे हैं, आप हमें कांटेक्ट करें, we'll be more than happy to help you. कुछ और इन्फॉर्मेशन आपसे चाहिए जो अभी टाइम नहीं आपसे नहीं बात कर सकते, so let's just move on. We also had Afzal Saab, came a student visa, got curtailed extension. FLR was refused. Married to a British citizen, and obviously his college or leave as a student has been curtailed because obviously he never attended the college. But his missus is expecting a child, and so we can help in this one. Yeah. I mean, possibly for life in the UK, Article 8 human rights. जी, अफजल भाई आप हमें कांटेक्ट करें, आपको छोटा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं. We can help you in this one. हमारे कॉलीग ने आपको बताया, we can help you. Contact us, email पे हमें भेजिए information. We'll get back to you with your contact number. ज़रूर लिखे. We had IMRAN called, it was spouse visa 2000, and he had a problem with wife and she refused. Basically, he's got a contact order for children. Family orders going through courts. Yeah, I mean his application purely hinges on the fact that the court actually grants him the contact order, because the marriage obviously has already dissolved, doesn't exist, and the only contact that he has to life in UK is through his children. So if he loses that contact as well, which is what his ex-wife is trying to do, then he'll have no basis to stay here. Sure. So it is very critical that he seeks advice of a good, reputable solicitor who specializes in family law. We can obviously assist him with that as well. And then obviously once he wins his application for contact order, he would be allowed to continue and stay here. बिल्कुल इमरान साहब आप वॉच कर रहे हैं, एंड वी कैन हेल्प यू दिस केस. बट लाइक माय कॉलीग जैसे उन्होंने अभी मेंशन कराई, आपका वेरी इंपॉर्टेंट है. वी कैन गाइड यू ऑन योर फैमिली मैटर ऑन दीज इश्यूज. आप हमें ज़रूर ईमेल भेजें. टाइम शॉर्ट है, अगर आप जून की आपकी हेयरिंग है तो आप प्लीज़ हमें कांटेक्ट करें और वी बी एबल टू गाइड यू ऑन दिस वन, बिकॉज आपका पूरा केस हिंज होता है कॉन्टैक्ट ऑर्डर पे, and how is that going to be affected. Aslam साहब ने जो फ़ोन करा था, shared ownership, again he needs to really realistically go back. Yeah, I mean we can't give any advice on regulated financial we cannot cover. Although उन्होंने clearly कहा था मैं आपसे interest rates की नहीं बारे में बात कर रहा हूँ, but on a shared ownership scheme, I think he needs to go back to the housing जिनके the business people who are selling them and discuss with them the I mean he can look up approved financial advisor, independent financial advisor
from Yellow Pages or the internet. ठीक है, Aslam Saab, thank you very much for your question, and I'm sorry we could not advise you on that one because of the FSA regulated issues. And Khan Saab ki jo ID call, 2 sons were refused, and again we had some difficulty actually understanding his question. He's a British citizen himself, got British passport. All of his other children have managed to get British nationalities passport. There's only issue with one of them. Was refused. They challenged it, went to the court. Granted a 27-month visa. On the face of it, it looks like that the courts have given discretionary leave. Yeah. And under the new rules, you have to live here for 10 years under discretionary leave before you'd be able to apply for ILR. बिल्कुल हाँ साहब, आपको थोड़ा सा इंफॉर्मेशन मिल चुका होगा. आपकी जो केस है, वी कैन हेल्प यू विद दिस वन. आप हमें ज़रूर कॉल करें. हमारा जो ईमेल एड्रेस है, आप उस पर हमें ईमेल भेज दें, एंड वी बी मोर देन हैप्पी. आई थिंक वी रन आउट टाइम शायद एज यूजुअल. कॉलें आ रही थी बहुत सारी. अगेन हम आपसे माजरत करते हैं फॉर नॉट बीइंग एबल टू टेक सम ऑफ देम कॉल्स. मगर होपफुली इंशाल्लाह जो आपकी कॉल्स आए, हमने आपको इस पर अंडरस्टैंडिंग आपको बताया क्लियरली, आपकी पोजीशन क्या है, लीगल पोजीशन भी बताई. आपकी कुछ सवाल में हमें और इन्फॉर्मेशन चाहिए, जो 1-2 कॉल जिनसे हमने रिक्वेस्ट करी, आप हमें ज़रूर कांटेक्ट करें. हमारे जो ईमेल आ रहा था उस पर हमें ईमेल भेजें, और आपको फिर हम आपको इस इंफॉर्मेशन की डिटेल्स बताएंगे क्या कर सकते हैं. एंड ऑब्वियसली आई जस्ट वांट टू थैंक द व्यूज़ एंड द कॉलर्स who've come on this afternoon on the legal matters, कानूनी मशवरे. और obviously हम next week में ये continue करेंगे about any further changes, and we'll discuss about the business visa. Next program में ये discuss करेंगे about the business visas, और थोड़ा सा आपको ये भी बताएंगे आप किस बेसिस पे इन चीज़ों को करें. अगर आप पाकिस्तान में, अगर आप UK में स्टूडेंट वीज़ा पे, तो आप ग्रेजुएट एंटरप्रेन्योर क्या होता है, विल categorize that. So once again आपका शुक्रिया करते हैं. Thank you for watching Legal Matters, कानूनी मशवरे, और हमें इजाज़त है next week, and we'll be back with legal issues, legal matters. Thank you for watching the program.